student, this is Rajeswari and welcome back to my channel English with Rajeswari. So in the last class, I have already discussed how to give your self introduction in a effective way. So today I will discuss or I will tell you how to give your self introduction and introduction रे हमरो कौन points रहिबा दरकार बा हमकु कौन कहिबा दरकार. तो सेटा को आज हम डिस्कशन करिबा. So discussion करिया पूर्वरु please subscribe my channel, like and share my video and give your valuable comments. So let's get started. समझ आइतला लास्ट जो क्लास रे कोन थिला जे बिफोर गिविंग अ सेल्फ इंट्रोडक्शन वी हैव टू रिमेंबर 5 थिंग्स. सो आज हमें सेही 5 थिंग्स को नै कि हमें डिस्कशन करिबा हाउ टू गिव योर सेल्फ इंट्रोडक्शन, राइट. सो हमरा फर्स्ट सेल्फ इंट्रोडक्शन रे पॉइंट थिला स्माइलिंग फेस, योर वॉइस शुड बी लाउड, देन आई कांटेक्ट. एबे आसीबो पॉइंट कोन ना हमें केमिति स्टार्ट करिबा, हमें केमिति हमरो सेल्फ इंट्रोडक्शन दबा, हमें केमिति स्टार्टिंग टा हमरो केमिति रहइबो. जेतले हमें सडनली जने पचारे दे हमको जे से अबाउट योरसेल्फ, सेतले हमें रहि जाऊ समटाइम्स पे हमें ब्लैंक हे जाऊ जे कोन कहबा को टू स्टार्ट करबा, राइट. सो हमरो फर्स्ट थिला कोन ना ग्रीटिंग. सो इज अ ग्रीट मींस कोन वेलकम. वेलकम करबा होची ग्रीट. सो ग्रीट रे हमें कोन कहबा मु कहितली गुड मॉर्निंग. Good morning. How could you say? You can say hello everyone. Understood? So greet we call it good morning ma'am or good morning sir or good morning everyone or hello everyone. Then the second point, greet for a name. So it is our first greet, then name. So name को हमें केमिति कहि परिबा. So always you say my name is. Am I right? Okay. So according to you it is also correct. You can say my name is. So I can say my name is Rajeswari Panda. But there are many alternatives to say your name. So जानिबा जे यार alternatives गुडा को कोन. You can say I am. So it is my name बदलरे you can say I am Rajeswari Panda. So my name is Rajeswari Panda or I am Rajeswari Panda. तो दीटा जाको कहि परबो जोटा कि जो वर्ड सहित जो सेंटेंस सहित you are comfortable you can say this. So I am, then you can say also this is very informal. This is जोटा कि मु तुम स्टार्टिंग रु कहे हेलो माय डियर स्टूडेंट दिस इज राजेश्वरी कहे तो सेटा भी तुम्हें भी एटा इंट्रोड्यूस करि परबो इन इनफॉर्मल वे. दिस इज ऑल योर नेम. सो एठी असला माय नेम इज आई एम एंड दिस इज. सो एठी मु तुमको बहुत अल्टरनेटिव्स देली. यू कैन से बट डोंट से माय सेल्फ. तुम सेठी माय सेल्फ कहबो नै. सो माय सेल्फ इज टोटली इनकरेक्ट. तुमको कहिबार अछि कोन ना माय नेम इज नॉट आई एम, आई नॉट आई एम. Not I am. So I am Rajeswari Panda or my name is Rajeswari Panda or this is Rajeswari Panda. Whatever your name is, just comment. Okay. So next, after name, place. After name, place. Place means कोना तुम्हें कोठू आसीचो or where are you from, right? तो तुम्हें कौन को जेटा जोठू आसीचो तुम्हें से you are I am from को I am from. Am I right? तुम्हें एटा को I am from बालेश्वर और I am from भुवनेश्वर और I am from भद्रक जहाँ भी जोठू भी आसचो कहि सला पर you can say also I belong to. Then there are more alternatives also. I belong to, then you can say I hail from. You can say I hail from. Then you can say I have come from. You can also say I am basically from.
or even you can say I am from Bhubaneswar but now I live in Baleshwar. You can say also I live in your place name. Clear? So I gave you many alternatives to say where are you from or your name is, right? So according to your convenience or जो तुम्हारा sentence सहित you are comfortable, you can pick this sentence and say about yourself while giving your self introduction. Clear? Then the next, after from, you can say age. For students, you have to mention as but not interview, right? So जेतबेले तुमे स्टूडेंट अछ तुमे एटी कहि परिबो कोन एज रे एज I am according to your age I am 18 years old or I am 19 years old, right? You say always I am 18 years old, and but also you can say I am just 18. Clear? एटा हमको कोटा हमको भलो सुना जाउछि जोडा कि एटा I am just 16, I am 18 years old. एटा सुनी सुनी आमे भी बोर हे गलोनी, कहि कहि तमे भी बोर हे गलोनी. So you can say I am just 16. Clear? Then about your family, you can say about your family if necessary, but जेहेतु आज हमर स्टार्ट क्लास बेसी पॉइंट्स दे देले तुमको लागि जो हमको एते कहबार अछि. सो फर्स्ट थिंग यू जस्ट से 5 lines, then I will discuss the rest of the things which you want to say. Then next, about this is only self introduction for students, how to introduce yourself in your school or in your college, or how to give your self introduction in a school welcome ceremony or any gathering. But next class रे मु तुमको सिखेबी कोन ना इंटरव्यू पाई केमिति इंट्रोड्यूस करिवो. So today these are the only basic things how to introduce yourself for only for students. So next point, hobby. So next point, hobby. Hobby को तुम मैंने केमिति को I like, right? I like this, I like that. So first thing, what you say, I like to play chess, right? You say I like to play chess. Then you can also say I like playing chess, right? Then also you can say I am a good singer. This means when you say I am a good singer, this means singing is your hobby. Then you can say I like to play chess, I like playing chess. This is the difference. If you use to जेतल तुम एटी to infinitive use करछ, don't use ing. एटी तुम playing you कहबो नाही. I like playing. If you have one hobby, then you can say I like to play or I like playing chess. But if you have more than one hobbies, what you can say, तुमे कौन कहि परिबो सेठी. जदि तुमरो गोटे रु अधिका हॉबीज अछि ताहले तुमे सेठी कहि परिबो my hobbies are playing chess and singing. Understood? So if you have more than one hobby, you can say my hobbies are playing chess and singing. So if you have one hobby, then you can say I like playing, I like to play chess, or I am a good singer, or I am a good cook, etc. Clear? Then the last point you have to say about your aim. About your aim or ambition. About your aim or
ambition. So what you say, तुमे कौन को तुम्हारे aim और ambition विषय रे? I want to become a, right? I want to be a teacher. You can also say I want to become a teacher. Also you can say my hobby is to be or become a teacher. Clear? So finally, after giving your self-introduction, just say closure. Closure is most important. So in closure, you can say a closure. So closure में कौन कोई बैठी ना thank you or have a nice day or thank you and have a nice day. So एठी आसिला हमरो finally तले तुमे introduction दउचो. These are only 5 basic things. I will discuss the more points जोटा कि आमे नेक्स्ट क्लास डिस्कशन करबा. आहुरी भी बहुत पॉइंट अछि जोटा कि तुमको इंटरव्यू रे सेल्फ इंट्रोडक्शन ले दरकार हो. एठी के होची बेसिक जिंस जोटा कि स्टूडेंट्स मन को दरकार जो माने कि एबे जो पिला माने 10th पास करबे जो +2 जिबे जो कॉलेज को सेठी जेतोले तांको पचरा जिवो जे से अबाउट योरसेल्फ और गिव योर सेल्फ इंट्रोडक्शन. सो तुमे माने ब्लैंक हबो नाही सेति पे मु डिस्कशन करछि जेतो तुम रिजल्ट बाहरबो तुम नुवा जगह को जिवो एडमिशन न पई सेति बेले तुम कहबे जे गिव योर सेल्फ इंट्रोडक्शन और से अबाउट योरसेल्फ. दैट्स व्हाई आई देखो एठी तुमरो डिस्कशन करबा. फाइनली आउ थरे हमरो फाइनल डिस्कशन. ग्रीट. स्टार्ट विथ ग्रीट. से गुड मॉर्निंग और हेलो एवरीवन. देन से योर नेम. there is many alternative तुम पाखरे एठी बहुत गुडा अल्टरनेटिव अछि. तो एठी अल्टरनेटिव्स कोन तुमरो नाम को कहिबार सब बेले कहबा दरकार नै जे माय नेम इज लोक सुनी सुनी की बोर हे जिवे. सो यू कैन से माय नेम इज आई एम और दिस इज. क्लियर? देन प्लेस वेयर आर यू फ्रॉम. जेतले जने तुमको पचारिबो जे तुमे वेयर आर यू फ्रॉम. So you can say also जे what's your name, my name is, you can say my name is or I am. एमती भी क्वेश्चन में भी तुम एमती भी आंसर दे पारिबो. So आज हम इंट्रोडक्शन डिस्कशन करछे तो इंट्रोडक्शन विषय रे डिस्कशन करबा. So place I am from, I belong to, I hail from. Hail from means ए डिस्ट्रिक्ट रो तुम आछो तो डिस्ट्रिक्ट नेम और तुम्हारो प्लेस नेम. I have come from or I am basically from. So एटी तुम्हारो नेम लिखबो और बेसिकली फ्रॉम भुवनेश्वर, बालेश्वर, भद्रक, कटक, शासपुर एनी place. Or you can say I am from Bhubaneswar but I live in Bhadrak. You can say also like this. Then age. You say I am 18 years old or you can say I am just 18. Then hobby. What's your hobby? I like to play chess. I like playing chess. Then you can say I'm a good singer. I'm a good cook. I'm a dancer. Or you have more than one hobbies, you can say my hobbies are dancing and singing. My hobbies are playing cricket and also playing chess. You can say also. Then about your ambition. I want to be a teacher. I want to become a teacher. Or my hobby is to be a teacher or my hobby is to become a teacher. Then thank you and have a nice day. तो एते की तुम्हारा बेसिक जिंस कहबार अछि. But besides that, yeah, व्यक्तित्व you can say if family is important about your family. तो हमें next class में discussion करिबा how to say about your family. से विषय तुम family विषय रे केमति discussion करिबा. Hobbies विषय रे केमिति क्वेश्चन करा जाय जदि के कोन क्वेश्चन करे तार आंसर रे कोन आसीबो सेटा में डिस्कशन करिबा. So एबे पई just do one thing. Just write down in your copy
these things what you want to say, I am from or I am or my name is, I have come from, जोटा तुम कंफर्टेबल गोटे कॉपी नियो सेठी पॉइंट लेख जे गुड मॉर्निंग पूरा जेमिति लेखा देछि एठी मु तुमको अल्टरनेटिव्स देछि जस्ट यू हैव टू पिक वन सेंटेंस एंड राइट डाउन तुम्हें तुम गोटे सेंटेंस जोटा तुम्हें कंफर्टेबल से सेंटेंस को नियो गोटे कॉपी रे लेख जे गुड मॉर्निंग स्टार्टिंग करो देन आई एम योर नेम यू वेयर आर यू फ्रॉम आई एम फ्रॉम देन आई लाइक देन आई वांट टू देन थैंक यू एतिक लेख देन स्पीक योरसेल्फ तुम निज को निजे कुह बारंबार कुह मिरर देखिकी जदि तुमर के फ्रेंड अछंती तांको सामने तुम कहि की प्रैक्टिस करो आ आम जेमती कहि जे स्पोकन इंग्लिश टा कोन कहिबा प्रैक्टिस हमको दरकार लेखिबा प्रैक्टिस नुहे तो जब बारंबार तुम कहबा आज 2 लाइन कहला अटकी जाउछ देन तुम 3टा लाइन को देन 4 लाइन्स देन 5 लाइन्स एमिति धीरे धीरे कहिले तुमर स्पोकन इंग्लिश क्लियर हो एंड नोटिस माय प्रोनाउंसिएशन जोटा कि तमे आई एम कहउछ आई एम नॉट आई एम तो सेटा को धीरे धीरे प्रोनाउंसिएशन ऊपर ध्यान दे जेतरा हमें स्पोकन इंग्लिश आगु जीवा तुमको सेटा भी सिखेबी केमती अल्फाबेट प्रोनाउंस करा जाय सो फर्स्ट थिंग आज तुमरो एति की दिया गला टास्क जोटा कि तुमे प्रैक्टिस करो देन तुमे कुह इफ यू हैव एनी डाउट और जोटा कि तुमे बुझी पारिनो कि किछि डाउट आछि देन तुमे मते ईमेल रे पचारि पारिबो तुमे मते कमेंट बॉक्स रे पचारि पारिबो यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग क्लियर थैंक यू हैव ए नाइस डे टेक केयर